Hello, dear student. Good afternoon. With the concerned teacher also present in the class, this is Sankar Sahu. Welcome to everyone to this live class from Virtual Studio, District Education Office, Sundargarh. Dear student, we are dealing with the various concepts of our English subject, and we have learned a lot of things from the poetry section, from the prose section, from the grammar section, and related to the comprehension writing. The writing section is a vast particular part, we can say, where we have to focus upon different concept related to writing. So under writing concept, we have essay writing, application writing, report writing, okay, and question answer of those prose and poetry we have already acquainted, and we usually do every day in our classes. But dear student, today we are going to learn how to write an essay in a proper way, the steps undertaken that leads us to write an essay in a various confident way, we can say that, or in a various particular type of essay where we have to write the actual concept that demand. Dear student, different kind of essay it is asked in the examination, so today's lesson will be regarding all those. So without much wasting our time, let's proceed towards the smartboard and we will explore today's lesson. Okay, dear student, so today's lesson we will begin, and particularly I will cover your one essay, that is your school. And here, before going to learn the particular essay, so first of all we will try to explore the importance of writing skills. Dear student, when we learn a particular language, there are four skills that we need for complete communication. It means we take the help of language. The language may be Odia, the language may be Hindi, or the language may be English, whatever may the language. But while we are communicating in any language it may be, so it has four skills, and with the help of those four skills we can able to communicate completely in that particular language. So when we learn our native language, for example Odia or any language, we usually learn to listen first, then to speak, then to read, and then to write. So these are the four language skills that we have acquired, and every day we are dealing with these. So dear student, this is called as the four language skills, where we have to focus upon our listening skills, because while we listen, we learn a lot, and that is the input we can take. Okay, so while we are listening, we are taking the input into our brain in analyzing, and after that we can able to speak. The output it is coming, that is your spoken words, we can say that. So while we are learning a particular language, we followed, these are the skills, and this is systematically we learn it. So first we listen, then we try to speak. As usually from the very beginning, whenever you are a small child, you have learned from your parents various words. You have started speaking. After that, you have enrolled into a school. The school has taught you how to read, and next to it, how to write. So dear student, while we are listening, we can able to speak, and while we can able to read a particular sentence, after that we can able to write also. So we can say, out of those LSRW, listening, speaking, reading and writing skills, in input we can take listening and reading skills. So by listening from others we can able to learn, and by reading from the books, from the magazines and from various books, we can also able to learn the various components of a particular language. After that we can able to speak properly, and also we can able to write properly. So dear student,
All these skills we need to focus very much, because whenever we are listening and reading properly, after that only we can able to speak and write properly. So this input part also important and the output part also important. So dear student, in this way we will learn, and we are learning usually the skills every day. But dear student, today we are going to focus upon the writing skill that is related to essay writing, and let's explore the meaning of the term essay, because dear student, in your examination, in writing portion, essay, it is asking every time an essay that is of 10 marks. You have to write the particular essay out of 200 words. So from the essay only, the particular examiner who is evaluating your exam paper, the evaluator we can say, will judge how much you are talented, how much your understanding regarding a particular language, dear student, because from writing essay, one particular teacher will guess that this child has written well, and this child has must command over this language, and whatever the things it has written previously, it may be the long questions, the particular writing from the poetry section, prose section, report writing, application writing, your passage writing, whatever you have written, that will be more valid. The teacher will think the student has really written all those things of your own. Whenever the teacher will evaluate your essay part, and when you have written the essay part very clearly, the teacher will guess. माने यार अर्थ है जिते टीचर टी देखिबो तुमर एसे राइटिंग बहुत सुंदर हेछि, तो टीचर टी जानि जिवो ये छात्रटी बहुत सुंदर भाव रे जिनसटी बुझीची, तार राइटिंग स्किल बहुत बढ़िया अछि, ऊपर जहा मध्ये लिखिची क्वेश्चन आंसर सेटा पेसेज राइटिंग रो हो, क्वेश्चन आंसर प्रोज सेक्शन रो हो, पोएट्री सेक्शन रो हो, से निजे लिखिची एवं बढ़िया लिखुची, से गोटे पॉजिटिव इंप्रेशन तम कॉपी रु तम एसे राइटिंग रु से नहीं जेबे, एंड ओवरऑल यू विल गेट ए गुड मार्क्स. सो वी मस्ट डू एसे वेल. एसे राइटिंग पार्ट को हमें निहाती भाव रे करिबा, एवं we need to do well, because 10 out of 10 we try to get from this section. So how will get? By following the steps, by following the outline whatever it is given to you. So first of all, let's proceed. Explore the meaning of the term essay. So an essay is a short piece of writing which is set around a specific topic or subject. गोटे particular subject दिया जाइए तुमको एवं topic दिया जाइए, ता ऊपर तुमको लिखिबा को हेइ थाए किछि sentences तमे सेठी लिखिबो एवं गोटे short piece of writing जोटा हमें essay बोली कहूची. The piece of writing will give information surrounding the topic but will also display the opinions and the thought of the author. माने जी लेखुची writer रो thought एवं opinion सेठी reflect हेइ थाए. ओके, तो सेठी पय जते बेले हमें लेखुचे essay, हमें points गुडा को निहती टच करिवा कथा, and we need to give our opinion, our thought in a beautiful manner. An essay is also used as a way of encouraging students to develop their writing skill. एवं आमे जेते गोटे essay लिखि थाओ, तार विभिन्न आउटलाइन को टच करि थाओ, एवं हमरो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, हमरो ओपिनियन, थॉट सेठी आमे जेते एक्सप्रेस करि थाओ, that also develop our writing skills, imagination skill, and the creativity. It is developed. तो डियर स्टूडेंट जो हाई ऑर्डर थिंकिंग जोटा कि हमें हॉट बोली कहि थाओ, सेटा तो डेवलप होई थाए, ता परे परे हमर जो राइटिंग स्किल ताहा मध्य इंप्रूव होई थाए. तो डियर स्टूडेंट एसे हमें लिखिबाटा निश्चित भाव रे सिखिबा कथा. एंड डियर स्टूडेंट, व्हाइल वी आर फेसिंग द वेरियस काइंड ऑफ एसे, वी हैव नेचुरली 4 टाइप्स ऑफ एसे. तो कैटेगराइज हमें कर देछि एबे नैरेटिव एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे, आर्गुमेंटेटिव एसे, जनरल टाइप एसे. तो डियर स्टूडेंट हमें देखिबा नैरेटिव एसे रे को एसे गुडा हमकु पचरा जाउची, डिस्क्रिप्टिव एसे रे हमकु कोटा पचरा जाउची, एवं आर्गुमेंटेटिव एसे रे कोटा पचरा जाउची. बिकॉज़ हमें विभिन्न प्रकार एसे जते बेले देखिथो एग्जाम रे आसुची, प्रायतः तुमकु 3टा एसे पचरा जाय थाए. विभिन्न ए जो नैरेटिव एसे रो गोटे, नहले डिस्क्रिप्टिव एसे रो गोटे, नहले आर्गुमेंटेटिव रो गोटे, नहले जनरल टाइप रो गोटे, एभली कि तुमकु 3टा एसे पचरा जायथिबो. Wherever you have focus
तमे नैरेटिव एसे गुडा को जदी फोकस करथिबो सेथु मधुर गोटे लिखिबो जोटा पढिथिबो डेस्क्रिप्टिव एसे गुडा को जदी फोकस करथिबो सेथु लिखिबो गोटे जदी आस्थिबो तो डियर स्टूडेंट आमे देखिबा एबे कोटा नैरेटिव एसे कोटा डेस्क्रिप्टिव एसे एभली भाबरे आमे गोटे कैटेगराइजेशन ठीक करिछि तो नैरेटिव एसे इज वन व्हिच डिटेल्स अ स्टोरी सेठी गोटे माने तुमको तुमर एक्सपीरियंस गोटे स्टोरी रिलेटेड तुमको पचरा जाइथिबो तुमको नरेट करिया को हबो तुमर एक्सपीरियंस ऑफन टाइम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू तो जंती तुमको पचरा जाइथि पारे ए विजिट टू अ फेयर तो तमे कोनसी मेला बुली जाइथिवार सेठी एक्सपीरियंस जो तमे कलो ताकू नै कि गोटे एसे लिखिबो तो सेठी बहुत गुडे आउटलाइन देथिबो एंड बेस्ड ऑन दोस आउटलाइन यू हैव टू touch those points and your experience you'll write when you have visited a particular fair what you have experiences that you need to write under this essay a railway journey tome kibi railway journey jodi karithibo jodi asthibo a railway journey ebong tome jodi comfortable feel karibo a railway journey ebong tar related point dekhibo tome lekhi paribo a railway journey a journey by bus a visit to an exhibition mane ame seta science exhibition hei pare बुक एग्जिबिशन है पारे ओके बेले बेले तो पड़ी जाउछ तमरो आदिवासी मेला जोटा एग्जिबिशन तो डिफरेंट एग्जिबिशन इट इज हेल्ड इन डिफरेंट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इट इज हेल्ड बाय वेरियस स्कूल्स आल्सो इट इज हेल्ड बाय वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एंड बाय डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमिटी आल्सो समटाइम्स द वेरियस एग्जिबिशन इट इज हेल्ड इन वेरियस एग्जिबिशन ग्राउंड तो तमे जदि विजिट करथिबो सेथु गोटे लिखि पारो नेक्स्ट a visit to a place of interest in Odisha जदि कोनोसी इंटरेस्ट बहुत सुंदर दर्शनीय स्थान जदि जाइथिबो ता विषय लिखि परिबो a visit to a zoo जदि जू जाइथिबो एवं आसिला ए एसे you can well write an excursion you took part excursion माने field trip excursion माने field trip a picnic you have enjoyed जदि कोनोसी पिकनिक तमे स्पॉट को जाइथिबो and there you have enjoyed a lot dear student a visit to a place of interest in Odisha and a picnic you have enjoyed it is quite related तमे प्रायतः रिलेटेड करि परिबो जदि से स्थान को जाइथिबो पिकनिक मध्ये जाइथिबो तो a visit to a place of interest in Odisha से पर्टिकुलर पार्ट रे मध्ये लिखि परिबो a visit to a historical place तो a visit to a historical place or visit to place of interest in Odisha this is also quite resemble तमे सपोज जाइछो बुली कोणार्क टेंपल so you can write both the particular essay if it is asked anyone ए दीटा मधुर जे कोन सेटा पचारला तमे सेठी कंफ्यूज होबनी सेही सेम जिंस तमरो गोटे पर्टिकुलर जगह जोटा कि इंटरेस्ट इन ओडिसा गोटे इंटरेस्ट प्लेस इन ओडिसा सेटा हिस्टोरिकल प्लेस हे पारे सेटा गोटे पिकनिक स्पॉट हे पारे एटा क्वाइट रिलेटेड तो गोटे जदि प्रिपरेशन हेथिबो यू कैन एबल टू राइट एनी ओके तो डियर स्टूडेंट दिस इज कमिंग अंडर योर नैरेटिव एसे जोटी तमे नरेट करूछो गोटे स्टोरी तमरो बखाणुच तमरो गोटे लाइफ रो एक्सपीरियंस तमे सेठी बखाणुच दैट्स व्हाई दैट इज नैरेटिव एसे तापरे डिस्क्रिप्टिव एसे द डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव एसे कोन करूछो तमे डिस्क्राइब करूछो a descriptive essay will describe something in great detail the subject can be anything from people and place to objects and events but the main point is to go into depth तमे सेठी डेप्थ पूरा लिखुछो सेटा ही पारे your father your mother your grandfather dear student गोटे इंपोर्टेंट जिनस मु तुमको कहबो जाउची तुम तो SC1 एग्जामिनेशन बहुत जल्दी हेबाकू जाउची तो डिस्क्रिप्टिव एसे ऊपरे निश्चित भाबरे फोकस करिवो दिस इज अ गुड एडवाइस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू तो एटा तमर गोटे गुड एडवाइस हेई पारे डिस्क्रिप्टिव एसे रो जे कोनोसी गोटे तमरो आसी पारे एग्जाम रे काहे कि ना your father your mother your grandfather your grandmother your family your best friend your good neighbor your school your headmaster your class teacher your school peon your teacher the teacher you like the most your related जे कोनोसी गोटी एसे प्रायतः एग्जामिनेशन रे देखा को मिलुची से पचारुची तो सेठी एतले तमे एग्जाम रे आरंभ करिवो तमे माई रु स्टार्ट करिवो सपोज एग्जाम रे पचारा जिवो योर फादर राइट एन एसे about your father so what you will write the headline my father there you will write the headline my father तो ये जो my related by your related जे कोनोसी गोटी एसे पचारा जाउची तुमर एग्जामिनेशन रे तो एई पार्ट को डिस्क्रिप्टिव एसे पार्ट को तमे निश्चित भाव रे फोकस करिवा कथा एंड इट इज क्वाइट इजी बिकॉज़ यू आर describing a particular
topic that is given to you which is related to your life, where you are every day, you are dealing with those people, about those things and the place and the objects we can see. Tapre dear student ame jiba next type, that is argumentative essay. Argumentative essay re tome seti argument provide karucha, yes or no. When writing an argumentative essay, you will be attempting to convince your reader about an opinion or point of view. Seti tome tomar opinion doucha, tome sei favor re jai paro, against jai paro, because that is argumentative essay. Seti tome tomar opinion doucha. Ebong argumentative essay ti ସେଇଠି ତମେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ କରେକ୍ସନ ଥିବା କଥା, ମାନେ କରେକ୍ଟ ଥିବା କଥା, ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବା କଥା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଏରର ଥିବା କଥା ନୁହେଁ. Whatever your viewpoint you will give, that will be considered because you are giving your opinion. Smoking is injurious to health. Yes বা no? ତା ଉପରେ ତୁମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛ. Definitely smoking is injurious to health. Money is the key to happiness. କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ particular essay type ତୁମେ ଦେଖୁଛ, money is the key to happiness. ମାନେ ପଇସା ବା ଟଙ୍କା ହେଉଛି happiness ମାନେ ଖୁସି ର ଚାବିକାଠି ଆମେ କହିପାରିବା. ମାନେ ଖୁସିର ଯୋଉ ଚାବିକାଠି, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ଯୋଉ ଚାବିକାଠିଟା, ସେଇଟା କଣ ପଇସା, ସେଇଟା କଣ ଟଙ୍କା ନା. ହେଲ୍ଥ ବି ହେଇପାରେ, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ବି ହେଇପାରେ, ଓକେ, ଗୋଟେ লিডিং କରିବ ଗୋଟେ ପାୟସ୍ ଲାଇଫ, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ. କଣ ଖାଲି ଆମେ ପଇସା ଥିଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା? ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଦେବା. କେତେ ଜଣ କହିବେ ନା, କେତେ ଜଣ କହିବେ yes, so your opinion will give you. Okay, in that way you will prepare such kind of essay also. Does religious cause war? Is homework harmful or helpful? The internet a blessing or curse? Dear student, internet आजिकल दुनिया रे बहुत यूज होउची, तो इंटरनेट गोटे ब्लेसिंग, गोटे आशीर्वाद ना गोटे अभिशाप? Dear student, बहुत गुडे फ्रॉड होउची, लोक माने शिकार हो जंती, लक्ष लक्ष टंका तांकर सीज ही जाउची तांकर अकाउंट रु. बहुत जनकर photo videos, it is getting viral and people they are blackmailing to one another. Ebong some people also out of frustration they are getting suicide also. तो course भी केते केते बेले हे जाउची, इंटरनेट रो जेते मिसयूज होउची. तो आमे एबे एगुडा को जेते बेले पचारुची एग्जामिनेशन रे, so we will provide both the side, positive side and negative side. After that the conclusion you will give. तापरे next is TV good or bad, এটা गोटे मध्य टाइप ऑफ argumentative essay. तापरे general type, the student, an ideal citizen, good manners, road safety, the newspaper, sports and games, the winter season, the summer season, mobile phone, तार positive cons एवं pros डेटा लिखिबो, आउटलाइन तुमको देइथिबो. तो डियर स्टूडेंट, आज आमे देखिबा जोटा कि हमर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर essay, that is your school विषय. But before that I am going to tell you the general instruction that you need to follow while writing the essay. तो आमे कोन करिबा ना, be clear and try to get to the point. प्रथमे जो जो पॉइंट गुडा को दिया जाईची ताकू प्रथमे पढिबा एवं सेही पॉइंट को बेस करिके ही आमे लिखिबा पैराग्राफ्स गुडा को. एंती नोहे जे आमे गोटे पर्टिकुलर बुक रु मग अप कर देइची गोटे पर्टिकुलर essay एवं ताहा पढि मध्ये जाईची एवं हम मन इच्छा लिखि देबा. No, we need to write as according to the point given in that particular essay. The outline we will follow. Think about the subject and develop the outline given, which is so important. तो हमें outline दे के ही जीवा, सेठी को subject लिखिबा, को important point को हमें focus करिबा, से outline को ही base करी के हमें focus करिबार अछि. Make a paragraph for each major idea. जो जो major idea गुडा को तुमको दिया जाइछि outline गुडा को, प्रत्येक पाए गोटे गोटे हमें paragraph लिखिबा. Because dear student, outline wise तुमको मार्क्स थाए, को outline पाई गोटे मार्क थिबो, कोटी 2 मार्क थिबो, कोटी 2 मार्क थिबो, एंती एंती करी कि लास्ट को 10 मार्क्स. So begin each new sentences with a capital letter. जेतेले हमें प्रथमे सेंटेंस गुडा आरंभ करूचे प्रत्येक पैराग्राफ रे, प्रत्येक सेंटेंस परे हमें कैपिटल लेटर्स निश्चित भाबरे लिखिबा. Many student you are forgetting to write this. Punctuation ठीक से यूज करो ना. You will focus these things. Do write grammatically correct sentence. Try to write the essay between 200 words. It carries 10 marks. तो प्राय तो आज का डेट रे जो essay गुडा को आसी 10 marks रो, एवं you have to write within 200 words. दिसरु टिके अधिक हेले चलिबो, टिके कम हेले चलिबो, but around 200 words we must write because
इट कैरीज 10 मार्क्स तुमको 10 मार्क्स रु 10 मार्क्स आने को हेबाकू हेले 200 वर्ड्स यू मस्ट राइट अ नीट एंड लिजिबल हैंड आम चेष्टा करिबा हमर हैंडराइटिंग टिकू ठीक से लिखिबा पई एवं सुंदर के लिखिबा पई फाइनली रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन एवं लास्ट को हम थोड़ा रिवाइज कर दबा थोड़ा देखि दबा कोन हम लिखली सब आउटलाइन को टच कले ना नाही जदि हम सब आउटलाइन को टच करिबा वी विल गेट गुड मार्क्स ओके एवं एसे राइटिंग गोटे बढ़िया सुंदर opportunity to get good marks in the examination तो डियर स्टूडेंट हमें योर स्कूल एग्जामिनेशन इसलिए पचारिबो एवं ए आउटलाइन गुडा को जे देइथिबो मु किछि तो सिंपल आउटलाइन गुडा को नैछि प्रथमे नेम ऑफ योर स्कूल हेडमास्टर स्टाफ विषय तुम लिखि पारो स्कूल बिल्डिंग विषय लिखि पारो गार्डन विषय तुमको पचरा जाई पारे लाइब्रेरी विषय पचरा जाई पारे साइंस लैब इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन अचीवमेंट्स ऑफ द स्कूल योर फीलिंग्स अबाउट योर स्कूल तो ये सब आउटलाइन देइथिबो ए आउटलाइन को बेस करके तुमको लिखबार अछि तो डियर स्टूडेंट प्रथमे यार गोटे हमें सन डायग्राम करबा ना ए जो माय स्कूल योर स्कूल पढिथबो तुम कोन लिखिबो माय स्कूल लिखिबो ना डियर स्टूडेंट तो एटा तुमरो एसे प्रिपरेशन पाई तुम कोन करबो जते भी आउटलाइंस अछि ताको गोटे सन डायग्राम कर दबो जोटा कि विजुअलाइज हबो एवं विजुअलाइज जिंस गुडा को हमरो बेसी मने रहिथाय तो डियर स्टूडेंट आम प्रथमे नेम ऑफ द स्कूल को फोकस करिबा तापरे टीचर्स मान को विषय लिखिबा हेडमास्टर को विषय किछि लिखिबा स्कूल बिल्डिंग्स विषय किछि लिखिबा स्कूल रो गार्डन विषय किछि लिखिबा लाइब्रेरी आईसीटी लैब विषय किछि लिखिबा इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को फोकस करिबा एवं स्कूल रो कोनोसी अचीवमेंट्स अछि कि ताहा हमें लिखिबा एवं लास्ट को हमर कंक्लूजन पार्ट दैट इज आवर फीलिंग्स टुवर्ड्स आवर स्कूल So dear student, in this way, we will prepare when it is asked in the examination to write about your school. तो एटा होची से सन डायग्राम जहा को तमे गोटे प्रिपरेशन पाई तमे निजर कॉपी रे ताकू अंकी पारो एंड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू नीड टू प्रिपेयर योर एसे तो डियर स्टूडेंट ए पॉइंट को हमें टच करिबा तो जते बेले तुमे एसे लिखुछो ए आउटलाइन गुडा जते देइथिबो हमें तो ऑलरेडी सन डायग्राम काटी नेले एबे हमें गोटे गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को टच करिबा तो डियर स्टूडेंट प्रथमे जते बेले तमे गोटे एसे लिखुछो एसे रो नॉर्मली तमे एसे को हमें तीनटा पार्ट रे हमें कोन करिबा डिवाइड करिबा गोटे पर्टिकुलर पार्ट जोटा इंट्रोडक्शन हमें कहि परिबा इंट्रोडक्शन तापरे मेन पार्ट जोटा सेटा हला मेन बॉडी जोटा हमें थेडा को फोकस करिबा एवं लास्ट को गोटे हमें कंक्लूजन दबा तो डियर स्टूडेंट ये जो इंट्रो पार्ट बा इंट्रोडक्शन पार्ट ता एटा इंटरेस्टिंग हवा कथा काहे कि ना इंट्रोडक्शन रो ही टीचर को गोटे गुड मैसेज बा गोटे गुड इंप्रेशन जाउथबा कथा तो मैं इंट्रो पार्ट को ठीक से लिखिबा को चेष्टा करिबा ता फल रे कोन होबो ना टीचर गोटे गुड इंप्रेशन से नेबे हमरो लेखारु ना छुआडी भल लिखुची त हमें केमिति स्टार्ट करबा इंट्रोडक्शन पार्ट रे चेष्टा करबा सेही रिलेटेड टॉपिक रो कोनोसी गोटे कोटेशन तो विभिन्न प्रकार टॉपिक रो विभिन्न प्रकार कोटेशन तुम कॉपी रे गोटे लेखिकी प्रिपेयर हुआ तो जेंती माय स्कूल आसिला जेंती माय फादर आसिला माय मदर आसिला योर इंग्लिश टीचर आसिला योर हेडमास्टर आसिला तुम सेही रिलेटेड किछि कोटेशन लिखि परिबो सपोज तुमरो आसिला माय हेडमास्टर तुम टीचर रिलेटेड किसी कोटेशन दे पारिबो एजुकेशन रिलेटेड किसी कोटेशन दे पारिबो एठी योर स्कूल पचरा जायछि तुम स्कूल रिलेटेड किसी कोटेशन आरंभ कलो एसे राइटिंग ता इंट्रोडक्शन पार्ट ता तो एठी कोन लिखला हमें ना स्कूल इज अ टेंपल वेयर वी वर्शिप नॉलेज तो स्कूल होछि गोटे एमिति स्थान गोटे एमिति मंदिर जोठी हमें कोन करिथौ ना नॉलेज ज्ञान रो सेटा गोटे गंता घर ओके तो स्कूल नॉरिश गुड कैरेक्टर तो स्कूल हमको कौन मिलते ना गुड कैरेक्टर हमको प्रोवाइड करा जाय थे हमको हमर चरित्र गठन रे सहायता कराय थे मोरल वैल्यू हमको प्रोवाइड करा जाय थे साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द स्टूडेंट्स प्रीवियसली गोटे तमे वर्चुअल क्लास अटेंड कलो सीटी यू हैव लर्न द वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मैडम हैज डन इन फ्रंट ऑफ यू तो हमें स्कूल रे कौन सिखुचे ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट बा हमरो जो नॉलेज हवा कथा विभिन्न प्रकार साइंटिफिक
एक्सपेरिमेंट उपरे हमरो नॉलेज सेवा कथा जे हम सब बेले खोज करबा कथा किछ ना किछ अनुसंधान करबा कथा हमरो भितरे साइंटिफिक टेम्परामेंट स्टूडेंट को जगाई थाए कि स्कूल हेंस एवरीवन शुड गो टू स्कूल सेति पे समस्त स्कूल जीवा कथा तो स्कूल हमकु ओवरऑली गोटे गुड ह्यूमन बीइंग रे परिणत करथाय तो डियर स्टूडेंट एटा इंट्रोडक्शन पार्ट गोटे स्कूल व्हाट इज अ स्कूल रिलेटेड तो डियर स्टूडेंट तापरे हमें नेक्स्ट पार्ट को जीवा तो नेक्स्ट पार्ट रे हमें देखिथिले आउटलाइन सेठी थिला नेम ऑफ योर स्कूल तो इंट्रोडक्शन पार्ट रे हमें स्कूल विषय लिखिले गोटे कोटेशन लिखिले हमें एबे देखुचे नेम ऑफ द स्कूल ना सेठी तमरो किछ इंट्रोडक्शन तुमे देई पारो ना डायरेक्ट तमे तमरो स्कूल रो नाम मध्ये लिखि पारो तमरो ना न लिखि कि तो एठी मु गोटे नाम मेंशन कर देछि हमें आई एम राकेश पाक आई रीड इन क्लास 9th इन गवर्नमेंट हाई स्कूल सरगीपाली तमे डायरेक्ट स्टार्ट करि पारो आई रीड इन क्लास 9th इन गवर्नमेंट हाई स्कूल व्हाटएवर योर स्कूल नेम एंड इन आवर स्कूल it is you need to write the strength of your teachers you can also write the strength of the student also mu ethi teachers manakar strength deji students manakar strength mention karini you can write the student strength also so about the name I have already mentioned tapare ame dekhiba teachers manakar headmaster ebong staff manakar jo particular outline thila taku ame ei paragraph re touch kariba so there are 18 teachers in my schools and they are resourceful samana huchanti resourceful mane ज्ञान रो गोटे गंता घर समान समस्ते एंड एमिकेबल माने समान समस्ते फ्रेंडली एवं उदार हृदय समान हमकु माने फ्रेंडली सदृश्य पढ़ाई थांती गोटे वर्ड गुडा को लिखिबो बहुत सुंदर सुंदर वर्ड गुडा को तुम सिखिबो वोकैबुलरी यू नीड टू डेवलप व्हाइल यू आर राइटिंग एसे रिसोर्सफुल गोटे सुंदर वर्ड हमें लिखिले एमिकेबल फ्रेंडली दे हैव कोर्डियल रिलेशन अमंग देम तो सेमानक भितरे जो टीचर्स माने हम स्कूल रे अछंती तांको मानक भितरे गोटे कोर्डियल रिलेशनशिप अछि माने भलो संपर्क सेमानक भितरे अछि समाने मिसी काम करंती एंड ट्रीट अस लाइक देयर चिल्ड्रन माने हमकु तांकर निजर छुआ सदृश्य हमकु ट्रीट करंती दे टीचर्स इन द हाईएस्ट पॉसिबल वे जते बेस्ट ही परिबो समाने तांकर सेमाने दियंती एंड वी एंजॉय द लेसन टॉट बाय देम तो आमे माने छात्र माने छात्री माने तांकर जो लेसन गुडा को समाने जो पढ़ाई थांती आमे बहुत एंजॉय करू तापर हमें हेडमास्टर विषय किछि लिखि देबा द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल इज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन सी स्ट्रिक्ट एज वेल एज अफेक्शनेट इन नेचर से स्ट्रिक्ट मध्य थांती एवं अफेक्शनेट थांती बोली हमें एठी मेंशन कर देले तो डियर स्टूडेंट इन दिस पैराग्राफ वी हैव मेंशन द नेम ऑफ द स्कूल एंड द टीचर इट मींस द स्टाफ्स एंड अबाउट द हेडमास्टर वी हैव मेंशन हियर तो आमे तीनटा आउटलाइन को कवर कर देले गोटे पैराग्राफ रे आमे मेंशन कर देले तो विभिन्न प्रकार पैराग्राफ तमे सेठी मेंशन करबो छोटो छोटो पैराग्राफ मध्ये करि पर ताको आमे चाहिले दीटा पैराग्राफ रे मध्ये विभक्त करि परिबा प्रीवियस पैराग्राफ टिकु नेक्स्ट अबाउट द स्कूल बिल्डिंग हियर वी हैव रिटन सो आवर स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 10th तो हम स्कूल रे प्रथम रु दशम पर्यंत एजुकेशन प्रोवाइड करा जाय थे शिक्षा प्रोवाइड करा जाय थे इन द मेन बिल्डिंग आर द हेडमास्टर्स रूम एवं मेन बिल्डिंग रे कोन कोन अछि ना हेडमास्टर को रूम अछि द स्टाफ कॉमन रूम अछि एंड द ऑफिस ऑफ द क्लरिकल स्टाफ क्लर्क सारंकर मध्य रूम अछि देयर आर 12 क्लासरूम तम स्कूल रे 12 भी हे पारे 10 भी हे पारे को स्कूल रे जो स्कूल रे कम क्लासरूम गुडा को अछि तमे 6 मध्य लिखि पारो व्हाटएवर मे बी द क्लासरूम तो देयर आर 12 क्लासरूम one ICT lab, one library, one science lab in our school. तो तुम्हें पूरा फोकस करिवो आराम से को बिल्डिंग गुडा को अछि को हिसाब रे से गुडा को यूज होउची ताको तमे लिखि देबो देयर इज अ लार्ज ऑडिटोरियम हॉल तो जो स्कूल मान करे लार्ज ऑडिटोरियम हॉल अछि तमे लिखिबो लार्ज ऑडिटोरियम हॉल नथिले लिखिबार नाही तो देयर इज अ लार्ज ऑडिटोरियम हॉल इन आवर स्कूल जेहेतु हमर स्कूल रे अछि एठी मेंशन करा जायछि जो छात्र विषय रे मु लिखिछि सी छात्र वर्तमान मु हे जायछि एंड आई एम राइटिंग दिस पर्टिकुलर एसे ओके तो कंसीडर लाइक दिस जेहेतु एठी स्कूल रे अछि ऑडिटोरियम आई हैव मेंशन वेयर द मॉर्निंग असेंबली एंड ऑल स्कूल्स फंक्शंस आर हेल्ड एठी हम लिखि देले जे जो मॉर्निंग असेंबली रे सब फंक्शन हेल्ड करा जाय सॉरी ऑडिटोरियम रे सब फंक्शन हेल्ड करा जाय तथा मॉर्निंग असेंबली मध्य करा जाय थाए तापरे डियर स्टूडेंट तुम देखि परथबो क्लासरूम को मध्य हम देखै देले तापरे एई पर्टिकुलर पार्ट रे हम लिखुची स्कूल रे थिबा गार्डन विषय रे तो देयर इज अ गुड ग्रास लॉन इन फ्रंट ऑफ द मेन स्कूल बिल्डिंग तो तुम देखि परथबो जेहेतु
विभिन्न प्रकार स्कूल रे वर्तमान बहुत गुडे स्टेप निया जाय कि स्कूल रो जो एनवायरनमेंट को परिवर्तन कराई छी तो एवरी स्कूल मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट सो एठी हमें लिखी जे देयर इज अ गुड ग्रास लॉन तो देखि परतो गोटे बढ़िया ग्रास लॉन अछि सामना रे स्कूल बिल्डिंग रो of the main school building and there is a beautiful garden all around this grassland तो grassland रो चारिपटे beautiful garden करा है जी एवं where we can find many beautiful flowers तो सेठी हमें विभिन्न प्रकार flowers गुडाको फुटी थिबार देखि थाओ बोली तमे मेंशन करि परिबो तो in this way dear student we have touched a particular outline that is related to garden तो हमें garden related to मध्ये गोटे पैराग्राफ लिखि देली तापरे हमें जिबा स्कूल रो अन्य बिल्डिंग रो यूजेस जोटा हमें लिखिले स्कूल बिल्डिंग रे कोन कोन अछि ताकु टिके हमें पुनी एक्सप्लोर करिबा एज अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन द लाइब्रेरी विषय लिखिबा द लाइब्रेरी इज अ बिग वन देयर आर सेवरल थाउजेंड बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स एंड नोवेल्स एंड मेनी अदर बुक्स आल्सो यू राइट वी आर एनकरेज्ड टू बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड देम हमकु बुक्स बोरो कराबा पई दिया जाय थाए एवं मध्य सिटी हमें बहुत एन्जॉय करिकि पढ़ी थाओ बोली तमे लाइब्रेरी विषय लिखिबो डियर स्टूडेंट लाइब्रेरी सहित आहुरी मध्ये एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स गुडा को यूज होची विभिन्न प्रकार उपरे तो हमें ता विषय मध्ये लिखिबा आउटलाइन हिसाब रे मध्ये आउटलाइन को बेस करिकि पुनी आवर स्कूल हैज बीन आल्सो प्रोवाइडेड विथ आईसीटी लैब हमर आईसीटी लैब मध्ये अछि ई लाइब्रेरी अछि जोटा कि तमरो कंप्यूटर लैब रे तमे ई लाइब्रेरी हिसाब रे ताकू यूज करो सेठी ई बुक्स गुडा पढो वेरियस कंटेंट तमे वीडियोस गुडा को देखो यस और नो यस तो सबिठी तमे लिखिबो इन आवर स्कूल we have ICT lab that is e-library as a use as a e-library also पुणी laboratory अछि जोडी तमे साइंस प्रैक्टिकल गुडा करै था एंड स्मार्ट क्लासेस गुडा तो सब क्लासरूम गुडा करे 5T आसीबा पर हे अछि तो तम स्कूल यदि अछि तमे लिखिबो स्मार्ट क्लासेस those who are joining those we have already joined in this particular virtual class तमे तो पॉइंट ता मस्ट लिखिबो काहे कि ना तम स्कूल्स रे स्मार्ट क्लासेस अछि e-library मध्ये अछि laboratory गुडा को मध्ये अछि तो ए पॉइंट को निश्चित भाव रे लिखिबो we learn the lessons in a more productive way तो हम जो लेसन गुडा को लर्न करथौ पूरा प्रोडक्टिव वे रे माने निश्चित भाव रे तार फल हमकु मिलि थाए सेति पे हम एठी लिखिले प्रोडक्टिव वे रे हम लर्न करथौ बोली इट इज अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग डियर स्टूडेंट अगरु पाठ पढिबार शैली जहा थिला नथिला हमकु चिंता करबार नै वर्तमान तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सपीरियंस इन आवर स्कूल्स तो हमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस ताकू हमें रिमार्केबल करि परछे बोली तुम गोटे पॉइंट मध्ये लिखि पारो टू मेक द राइटिंग केची ओके तापरे डियर स्टूडेंट हमें नेक्स्ट पैराग्राफ रे पुणी लिखुची अचीवमेंट्स आवर स्कूल ओन मेनी प्राइजेस इन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट स्पोर्ट्स इवेंट्स तो हम स्कूल टी बहुत गुडे प्राइजेस जीतीची डिस्ट्रिक्ट लेवल रे मध्ये स्टेट लेवल रे मध्ये स्पोर्ट्स इवेंट्स गुडा करे बोली मध्ये तुम लिखि परिबो इट हैज ओन सेवरल प्राइजेस इन साइंस एग्जीबिशन जदि अन्य कोनोसी एग्जीबिशन तुम मध्ये जीतीछ दैट यू आल्सो राइट ओके तो एभली भाबरे द अचीवमेंट्स ऑफ द स्कूल यू विल आल्सो मेंशन तापरे डियर स्टूडेंट तमे लास्ट को कोन ऑब्जर्वेशंस तमे करो ना वी ऑब्जर्व मेनी इंपोर्टेंट डेज इन आवर स्कूल ना कोन कोन हम ऑब्जर्वेशन करूची वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे द रिपब्लिक डे द चिल्ड्रंस डे द टीचर्स डे द इंटरनेशनल योगा डे गणेश पूजा सरस्वती पूजा एटसेट्रा जहां भी तुमे सेलिब्रेशन करूछो जदि थिबो ऑब्जर्वेशन रिलेटेड गोटे आउटलाइन तमे ताकू पुणी लिखिबो In our school, every year we also plant trees in the plantation weeks in the month of July. तो हमें जुलाई मंथ जो वनमहोत्सव डे जो प्लांटेशन वीक पालन करूची सेठी मध्ये जो तमे प्लांट्स गुडा को जो कोन करथा वो करथा प्लांटेशन करथा ताकू मध्ये तमे लिखि परिबो ओके तो डियर स्टूडेंट एटा हला ऑब्जर्वेशन वेरियस ऑब्जर्वेशन डे गुडा को तो वी हैव कवर ऑलमोस्ट ऑल द आउटलाइन तापरे हमें कोन करबा ना लास्ट को जो आउटलाइन गुडा को अछि लास्ट को कोन कोन आउटलाइन गुडा को अछि ना योर फीलिंग्स रिलेटेड टू योर स्कूल जोटा कि हमें कंक्लूजन पार्ट दबा एभली भाबरे हमें कंक्लूजन पार्ट को लास्ट को पळे आसीबा सेठी मध्ये हमें किछि यदि कोटेशन जानि छे किछि कोर्स हम पाखरे यदि अछि हमें देई परिबा सो वी नीड टू लर्न अकॉर्डिंगली तो हमें कोन लिखु जे एठी ना ए गुड एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योरसेल्फ तो एजुकेशन होची गोटे ग्रेटेस्ट गिफ्ट गोटे बहुत बड़ उपहार जोटा को हमें निजे को निजे दउछि जोटा निजे को निजे हमें दउछि और एनी वन एल्स दैट वी लर्न फ्रॉम स्कूल तो हमें स्कूल को गले जो शिक्षाटी लाभ करूछि से जो शिक्षाटा सेटा हमें निजे को निजे गोटे बड़ उपहार दउछि जहार हमें
मालिक बनुचे से उपहारटीर आम निजे बन जाऊँ मालिक जहाँ को परवर्ती समय आम एंजॉय करुचे लाइफ रे गोटे शिक्षित मनीष हिसाब से समाज रे आम ज्ञान गोटे भंडार जहाँ को आम परवर्ती समय आम जीवन जीविका निर्वाह तथा जीवन टी जीवारे आम व्यवहार करुचे तो स्कूल टी को जीवा एवं सेठी लर्न करिबा वेरियस एक्टिविटी सेठी करिबा गोटे मजादार कहि परिबा लाइफ रो गोटे पार्ट तो डियर स्टूडेंट लास्ट को आम हमर फीलिंग्स जोटा आम कोटेशंस विथ हमर गोटे फीलिंग्स आम सेठी कंक्लूजन पार्ट दे देबा आम द एंड करिबा ए पर्टिकुलर पार्ट को सो आवर स्कूल इज आवर टेंपल ऑफ लर्निंग हमर स्कूल होउची हमर शिक्षार मंदिर आवर टीचर्स आर आवर गाइड हमर शिक्षक माने होचंती हमर गाइड हमर पथप्रदर्शक फिलोसोफर्स एंड मेंटर्स I love my school so much मु मो स्कूल को बहुत भल पाए it has given me so much यह मते बहुत किछि देइछि and I am proud to be a student at this school बोली कि तमे गोटे कंक्लूजन पार्ट दबो जोटा कि बहुत सुंदर हवा कथा so dear student in this way you will write if it is asked in the examination related to my school so dear student मु एजी तो कवर कर देली my school related this particular essay एवं तुम ट्राई करिवो जेभली भाबरे विभिन्न प्रकार आउटलाइन जहां भी किछि दिया जायछि रिलेटेड टू दोज आउटलाइन यू नीड टू राइट द पर्टिकुलर सेंटेंसेस किछि द पैराग्राफ विल राइट दैट इज किछि एवं ट्राई करिवो आरंभ रु गोटे कोटेशन लास्ट गोटे कोटेशन जो कंक्लूजन पार्ट रे देबा पई एवं बॉडी पार्ट रे जहां भी किछि तुम स्कूल रे बा जहां भी किछि तुम एक्सपीरियंस करूछो सेगुडा को तुम लिखिबो तो इंट्रोडक्शन पार्ट ता तुम 30 रु 50 वर्ड्स मध्ये लिखि पारो कंक्लूजन पार्ट ता मध्ये 30 रु 50 वर्ड्स मध्ये लिखि पारो बॉडी पार्ट को तुम ट्राई करिवो 100 वर्ड्स रे लिखिबा पई ओके ताहापरे यू विल गेट गुड मार्क्स तो प्रथमे 2 किंबा 3 मार्क्स तमरो इंट्रोडक्शन रे रहि जिवो 2 किंबा 3 मार्क्स तमरो कंक्लूजन पार्ट रहि जिवो मेन बॉडी पार्ट ता 5 रु 7 मार्क्स तमरो प्राय तो आउटलाइन गुडा को सेठी जो थिबो सेथरे फिक्स थिबो मार्क्स गुडा को एंड अकॉर्डिंगली तुमको मार्क्स दिया जाय थाए outline को base करिकी so in that way you will write the essay so dear student today I have covered the particular essay that I have set for all of you so dear student out example अछि my grandfather related about essay तमे देखि पारो I will scroll this particular essay quickly because you need to prepare this particular essay of your own my grandfather मु तुमको कहितली my related विभिन्न प्रकार essay तुम प्रैक्टिस करिवो एठी आउट मु my grandfather essay टा तुमको पई गोटे प्रेस्क्राइब करिछि गोटे लिखिछि तो आउटलाइन हे पर his name is education his dress appearance his works his nature his relation with you his dealing with the other members of the family reasons for your liking him and his qualities you admire तो प्रथमे तुमे इंट्रोडक्शन दबो जेंति इंट्रोडक्शन ता हमें स्कूल विषय लिखिथिले सेमति एठी ग्रैंडफादर कर मीनिंग दिया जी देखो one's grandfather is the father of the either of one's parents माने पेरेंट्स मानकर बापा को आमे कोन कहिथौ ना ग्रैंडफादर बोली कहिथौ तो एठी हमरो पेरेंट्स मानकर दीटा साइड थाए तो गोटे पैटर्नल गोटे मैटर्नल काहे ना बापा को भी बापा अछंती मां को भी बापा अछंती अलग अलग तमे दी जण को ग्रैंडफादर बोली कहिथौ तो को ग्रैंडफादर को कथा में लिखिबा जो माय ग्रैंडफादर whom I describe here is my grandfather father तो मेंशन कर दबो मु जो जेजे बापा को विषय लिखियो को जाउची सेटा मो बापा को बापा बोली तुमटी मेंशन कर दो ओके तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ते बळी भाबरे तापरे मेन बॉडी पार्ट जोट के आउटलाइन को बेस करके तुम टच करिवो तांकर अपीयरेंस तांकर एज तांकर लाइक डिसलाइक बॉडी पार्ट एभली भाबरे जीवो ओके डियर स्टूडेंट तांको सहित तुमर किभली संपर्क अछि से घरे केंति थांती कोन करंती एवं व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हिम एभली भाबरे यू विल राइट माय ग्रैंडफादर सेटा गोटे मध्ये प्रिपेयर हेबो माय ग्रैंडफादर माय ग्रैंडमदर माय फादर माय मदर एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट एसे तो एग्जामिनेशन आसी पारे डियर स्टूडेंट ए जो पर्टिकुलर एसे वर्तमान दीटा एसे मु तुमको शो करछि तुमको क्वेश्चन एंती पचरा जाय पारे विभिन्न प्रकार एसे तुमको पचरा जाय पारे write an essay in about 200 words one any of the following topics keeping to the outline given दी तीनटा एसे तुमको देइथिबो सेथरु तुमको गोटे करिवार अछि तो एठी मु आउटे मेंशन करनी तीनटा प्राय तो देइ थाए तुम दीटा मधुर जे कोनसी गोटे करि पारो दिस इज ऑप्शनल फॉर यू तो ए दीटा जो एसे तुमको देइछि होमवर्क पोएट्री ए दीटा मधुर जे कोनसी गोटे करिवो एवं तमे तमर कंसर्न टीचर प्रेजेंट इन द स्कूल तांको तमे देखैबो निश्चित भाबरे तो द क्रिकेट मैच यू हैव विटनेस एटा पढि पारि जो माने क्रिकेट प्रेमी एवं जदि क्रिकेट मैच तुमे विटनेस करिसो
तो को जगह रे प्लेस तुम मेंशन करिवो टाइम ऑफ द मैच को सीजन रे को टाइम रे तुम सेटा देखितलो ना समर सीजन रे तुम देखितलो समर वेकेशन रे ना जे कोनोसी पर्टिकुलर टाइम सेटा छुट्टी दिन हे पारे ना आ तुम छुट्टी माने स्कूल बंद करी तो जाइथिबो सेटा गोटे खराब कथा तो ठीक है सर टाइम पे मेंशन करिवो एंड द टीम्स की टीम थिले से फील्ड किभली थिला अंपायर्स माने किभली थिले एंड द स्पेक्टेटर्स माने दर्शक किभली थिले सेठी एन्जॉय करथुले ना नाही हल्ला मचौथुले ना नाही द फैसिलिटीज अवेलेबल सेठी कोन कोन फैसिलिटीज थिला से प्लेग्राउंड रे हाउ द मैच वाज कंडक्टेड किभली भाबरे मैच टी कंडक्ट कराइथिला स्मूथली ना सेठी किछि हार्ट्स मूवमेंट एरेजेस हेथिला एंड द एंजॉयबल मोमेंट्स तुम जो एन्जॉय कलो किभली भाबरे कलो रिजल्ट ऑफ द मैच किए जितिला गेस्ट किए थिले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज कोन कोन प्राइज थिला लास्ट को कंक्लूजन पार्ट तमे ए जो क्रिकेट मैच बा गेम स्पोर्ट्स विषय किछि उठे लेखिबो हेबा कथा ना स्पोर्ट्स गुडा को एनकरेज करा जिबा कथा एंती किछि रिलेटेड कंक्लूजन तमे दबो किछि आईटीची रिलेटेड थिंग्स तापरे आवर स्कूल आवर क्लास टीचर डियर स्टूडेंट आवर क्लास टीचर गोटे इंपोर्टेंट एसे एटा हे पारे तुम मानको पई जेतु तुमे क्लास 9 रे पढुचो सो नेम ऑफ द स्कूल तुम प्रथमे लिखिबो एतले क्लास टीचर तो प्रथमे तो डियर स्टूडेंट मु जेंति बतैथिली इंट्रोडक्शन पार्ट रे एजुकेशन नहले टीचर रिलेटेड किछि उटे कोटेशन दबो तापरे तुमे स्टार्ट करिवो नेम ऑफ द स्कूल रु तापरे द क्लास यू रीड इन तापरे नेम ऑफ द क्लास टीचर तुमरो लिखिबो तांकर एज तांकर अपीयरेंस केमति देखा जानती व्हाट सब्जेक्ट ही और सी टीचेस एंड हिज हर मेथड्स ऑफ टीचिंग से किबळी भाबरे पढांती हिज और हर गुड क्वालिटीज तांकर कोन भलो गुण अछि एंड योर फीलिंग्स अबाउट हिम और हर तमरो कोन तांको प्रति फीलिंग्स अछि तमे तांकू माने भल पाओ ना भल पाओनी ना गोटे एडमायरेबल गोटे फिगर हिसाब रे तमे नियो ना नियोनी योर फीलिंग्स विल कन्वे last to conclusion part. So dear student, this is all about today's lesson. I hope this is quite helpful to you from the exam point of view also, because in the examination one essay it will must ask out of 3 you have to write one. So tamane nishchit bhavare preparation hebo. The particular guidelines that I have given to you must follow to write properly in the examination. That will help you to get or score good marks overall. So dear student, prepare accordingly and hope you will follow all the rules and steps what I have suggest for you. So dear student, thank you very much.